Yes, hello everyone. Very good afternoon to all of you, my dear students. Very good afternoon. So we were discussing about the acceptance, right? Proposal we have completed. We were discussing about the acceptance, and acceptance is given under section 2B. Okay, right? And acceptance is given under section 2B. So acceptance क्या होना चाहिए? That should be absolute and unqualified. In order to convert proposal into a promise, the acceptance must be absolute and unqualified. Where it is written, Chirag? Section 7, clause 1. Okay. The acceptance must be absolute and unqualified. That is a mirror rule. Which who has given this mirror rule? Mullah. Okay, okay. Absolutely correct. Okay. In section 7, there are two clauses. Section 7, clause 1, that is absolute and unqualified. And section 7, clause 2 is talking about the manner in which the acceptance needs to be done. So that we have discussed in our previous classes. Okay. And today we are going to start with the that when communication is going to be completed. Okay. That is given specifically in section 4, right? Yesterday in our previous class we have discussed, I believe we haven't read the section, अभी पूरा नहीं पढ़ा उसको, सिर्फ एक लाइन पढ़ी थी. आज we will be reading that section, right? Section 4. But section 4 is talking about communication, when communication is complete. Section 4, when communication is complete. अब communication किस चीज का? Communication is of proposal or of acceptance or of revocation. ठीक है? Communication is of proposal या फिर acceptance या फिर revocation. ठीक है? Right? Communication of either proposal, communication of acceptance or communication of revocation when it is going to be complete. कि उसके accordingly complete कब होगा? Take out section 4 in your BERAC. If you are having BERAC with you, you may kindly take out, or if not, then you may have a reference from here. Okay, let me erase everything. I believe Karthik, it is visible, right? So it says, I'm reading it. It says communication when complete. तो communication again तीन चीजों का जो मैंने अभी आपको बताया, communication of proposal, communication of acceptance, and communication of revocation. So it says the communication of a proposal is complete. तो एक communication of proposal की बात कर रहा है, is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. तो पैरा 1, yes Mr. शरद आ जाओ, yes दीपांशी आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे कहीं पे भी बैठ जाओ, देखो very good. So over here, para 1 is specifically talking about what? The communication of proposal. कि प्रपोजल का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा? सपोज मैंने आपको एक ऑफर दिया, कार्तिकेय, विल यू बाय माय वॉच? ओके, दैट इज द प्रपोजल. तो व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट, एज सून एज ही हैव हर्ड इट, जैसे ही इन्होंने सुना, द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीटेड. ठीक है? But over here, if you read further, they are not saying anything related to place of contract. अगर आप इसको फर्दर पढ़ोगे शरद सेक्शन 4 को, तो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं लिखा हुआ है. यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है क्या? कम्युनिकेशन. कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा? कम्युनिकेशन प्रपोजल का, एक्सेप्टेंस का या रेवोकेशन का. But place of contract is also required to be known. That is also required. Very important. कि अगर place of contract नहीं पता चलेगा, तो अगर कोई breach करता है, तो अब suit कौन से कोर्ट में फाइल करोगे? Which court you will file a suit if you do not know that which is the place of contract? हालांकि यहाँ section 4 में लिखा नहीं है, but we have to deduce it from the judicial decisions, right? तो यहाँ लिखा नहीं है, nowhere you will find place of contract, but we have reduced it or deduce it
थ्रू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, राइट। चिराग समझ में आ रहा है? कार्तिकेय, शरद, प्रिया, दीपांशी, गुड। उमेद, सुनीता, प्रांजलि, ईशानी, एवरीवन ऑनलाइन स्टूडेंट्स। अब देखो, सो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउएवर वी हैव टू डिड्यूस इट फ्रॉम पैरा 3 एंड पैरा 4। ओके, place of contract can be deduced it from para 2 and para 3, right? 2 and para 3। हालांकि 2 में दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, अभी वो भी पढ़ेंगे। देखो मैं आपको हालांकि थोड़ा सा बता देता हूं। when communication is complete as against proposal, when it is reached to the person, right? When it is reached to the person, when communication of acceptance is complete। अब यहाँ पे दो केसेस अगर हम फर्दर पढ़ेंगे, पैरा 2 पढ़ेंगे तो उसमें दो चीजें, ठीक है, दैट वी विल बी रीडिंग। तो अब सेक्शन 4 में हमें क्या क्या पढ़ना है कि when communication is complete, सेकंड प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, सेकंड प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये हमें पढ़ना है। हालांकि यहाँ पे भी दो रूल अप्लाई होते हैं, वो हमें देखना पड़ेगा कि ये इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन है या पोस्टल रूल वाला कम्युनिकेशन है, ठीक है, नॉन इंस्टेंटेनियस। तो वहां पे दो रूल्स हैं, ठीक है, राइट। थर्ड हमें देखना है कि अगर सपोज बीच में लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस गायब हो जाता है, देन व्हाट विल हैपन, दैट इफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस is lost in between, कि अगर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आपने एक्सेप्ट करा, राइट, जैसे मैंने आपको लेटर के थ्रू भेजा कि क्या आप मेरी वॉच खरीदोगे 10,000 रुपए में, आपने वहां से लेटर पोस्ट कर दिया, यस, बट बीच में वो कहीं लॉस्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, मेरे तक पहुंचा ही नहीं, तो तब क्या होगा कि क्या तब कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, दैट वी हैव टू डिस्कस, राइट। सो अगर सपोज मेरे पास पहुंचा ही नहीं है ना, तो यहां पर भी तो सेक्शन 4 में कहीं लिखा हुआ ही नहीं है इसके बारे में, दैट इफ द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस डज नॉट रीच। और जब मैंने आपको बोला कि क्या आप मेरी घड़ी खरीदोगे फोन पर, आपने बोला यस, बट नेटवर्क इशू की वजह से मैंने आपका यस नहीं सुना, तब क्या होगा, क्या कंक्लूडेड होगा कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे तो लिखा ही नहीं इस बारे में। So that also we have to see, because section 4 is silent upon such situation, that if the letter of acceptance or if the acceptance does not reach, then what will happen। ठीक है, समझ में आ रहा है? गुलफिशा, हिमांशु, ईशानी, प्रांजलि, सुनीता एंड एवरीवन ऑनलाइन स्टूडेंट्स, प्लीज टेल मी। ईशानी ठीक है, उमेद ठीक है, कार्तिकेय, शरद, दीपांशी, प्रिया, चिराग, गुड, एक्सीलेंट। प्रांजलि ठीक है, सुनीता ठीक है, गुलफिशा ठीक है, हिमांशु ठीक है। अब नाउ ये जो चीजें मैंने आपको लिखवाई है, मतलब जो तीन चीजें हैं इसमें, प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा इफ द एक्सेप्टेंस गॉट लॉस्ट और डिस्ट्रॉय, तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज साइलेंट, सो फॉर दैट वी हैव टू रेफर इंग्लिश केस लॉज। ओके, इंग्लिश केस लॉज हाउएवर दे आर नॉट एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट, बट दे आर हैविंग अ हाई परसुएसिव वैल्यू, ठीक है, वो प्रेसिडेंट की तरह नहीं है, इंग्लिश केस लॉ हमारे ऊपर एकदम लागू नहीं होगा, बट इट हैज अ हाई परसुएसिव वैल्यू, ठीक है, राइट। अब नाउ पैरा 1 वी हैव डिस्कस्ड, पैरा 1 वी हैव कंप्लीटेड, इट सेज दैट कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट when it reached to the person, right, to whom it is made। Suppose मान लो, एक और चीज मैं आपको बताता हूं, ये जो सेक्शन 4 है ना, इट इज प्रिज्यूमिंग कि आप कम्युनिकेट कर रहे हो थ्रू लेटर्स। सेक्शन 4 इट इज नॉट प्रिज्यूमिंग कि आप कम्युनिकेशन कर रहे हो थ्रू फोन या इंस्टेंटेनियस आमने सामने आप बात कर रहे हो। अगर आप पढ़ोगे सेक्शन 4 को थोड़ा और, अभी हम पढ़ेंगे पैरा 2 पढ़ेंगे, उसमें आपको लगेगा कि ये
पोस्टल रूल के अकॉर्डिंगली चल रहा है। ठीक है कार्तिकेय, आपको पता है पोस्टल रूल क्या होता है? थोड़ा सा आइडिया है? गुड। अब मान लो सपोज दिस इज ए, this is B. Now he writes a letter of proposal. ठीक है, right? He put this on 1st January and that was delivered on 3rd January. ठीक है, right? So that was delivered on 3rd January to the B. So letter of proposal. ठीक है, right? So my question is that when communication of proposal is completed, Mr. Karthike, on 3rd of January. So over here, communication of proposal is complete on 3rd January. That is when he reached. Suppose 10 बजे उसको मिल गया 10 a.m. So that is at 10 a.m. ठीक है. So communication is complete on 3rd January. Right? Now let us. That is the first para. Para 1 में कोई डिफिकल्टी है नहीं. डिफिकल्टी आपको आ सकती है पैरा 2 में. एक बार इसका पैरा 2 पढ़ते हैं. ठीक है, राइट? शरद, समझ में आ रहा है? कोई डिफिकल्टी? ठीक, पैरा 2 देखो. अब पैरा 2 में भी 2 सब पैरास हैं. इट सेज द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर. ठीक है, एज अगेंस्ट द प्रपोजर. प्रपोजर कौन है? जो प्रपोज कर रहा है, उसके अगेंस्ट कब कंप्लीट होगा? एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन. व्हेन it is put in the course of transmission to him so as to be out of the power of the acceptor. ठीक है, and subpara 2 as against the acceptor when it comes to the knowledge of the proposer. ठीक है, तो यहां पर 2 रूल है, as against the proposer and as against the acceptor. Para 2, communication of acceptance. कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा? फर्स्ट में दे रखा है एज अगेंस्ट प्रपोजर, एज अगेंस्ट प्रपोजर, एंड इन सेकेंड दे आर सेइंग एज अगेंस्ट एक्सेप्टर. ठीक है, राइट? अब फर्स्ट कह रहा है कि एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन इट इज पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन. राइट, अब यहां लिखा है व्हेन इट इज पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम. अब इसका क्या मतलब है कार्तिक? यू प्लीज एक्सप्लेन. प्रपोजल की जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हो गई. अब बी ने जो है एक्सेप्टेंस लेनी है आपकी, तो जिस दिन वो लेटर पोस्ट कर देगा ना ए के लिए, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट. ठीक है, देखो, एज लर्नेड कार्तिकेय सेज, यस उमेद यू आर आल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट. अब देखो यहां पर ए ने बी को फर्स्ट को लेटर लिखा, इट रीच ऑन 3rd January. बी नाउ व्हाट बी डज. अब बी क्या करता है? बी उसको एक्सेप्ट करता है. या तो एक्सेप्ट करेगा या तो शांत रहेगा, राइट? या तो रिजेक्ट कर देगा कि आई डू नॉट एक्सेप्ट. ओके, राइट? अब मान लो उसने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट करा. लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस अब पोस्ट करा सपोज 5th January को 10 बजे पोस्ट कर दिया. तो जब 5th January को 10 बजे उसने पोस्ट कर दिया, नाउ हु विल बी बाउंड? ए बाउंड होगा या बी बाउंड होगा? ए. चिराग, स्प्रिया, शरद, दीपांशी,
यस ठीक है। सो ओवर हियर जैसे ही उसने फिफ्थ को पोस्ट करा, तो पोस्ट करा मतलब व्हेन इट इज पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, इट इज पोस्ट मींस व्हाट, इट इज पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। इट इज पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, ये नहीं कि मैंने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रख के अपने टेबल पे रख दिया। तो टेबल पे रखना आपने एक्सेप्ट कर लिया है, बट अभी प्रपोजर बाउंड नहीं हुआ। वो बाउंड तब होगा जब आप उसको एक ट्रांसमिशन में पुट कर दोगे और आपकी पावर से वो बाहर निकल सकता है। क्योंकि एक बार आपने पोस्ट कर दिया तो उसको वापस थोड़ी निकाल सकते हो आप, है ना। एक बार आप उधर चले गए, क्या नाम है, पोस्ट ऑफिस चले गए, आपने उसमें स्टैंप लगा दी, सारी चीजें दी, पैसे दे दिए, उसने रख दिया। अब आप उससे लेके दिखा दो वापस, क्या आप ले लोगे उससे वापस? ये नहीं नहीं मुझे चिट्ठी वापस नहीं भेजनी, वापस दो मुझे, नहीं, अब तो गया वो। इट इज पोस्टेड, क्यों? नाउ बिकॉज इट बिकम्स अ ऑफिशियल रिकॉर्ड, राइट। ठीक है, इट इज पुट इन टू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। तो जैसी इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन पुट करा, तो यहां पर ए विल बी बाउंड। अब ए विल बी बाउंड ऑन दिस डेट। अब ए के लिए प्रपोजल, ए ने प्रपोजल दिया, बी ने एक्सेप्ट करा, कब करा? 5th जनवरी को एक्सेप्ट करा। तो 5th जनवरी को ए विल बी बाउंड विद बाय दिस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इज इट क्लियर? सो यहां पर मैं लिखूंगा कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट प्रपोजर। प्रपोजर इज ए यहां पर, है ना, जिसने प्रपोज करा है, ऑन 5th January at 10 a.m. ठीक है, समझ में आया? इज इट क्लियर? गॉट इट? एज अगेंस्ट द प्रपोजर, मिस्टर चिराग, शरद, प्रिया, दीपांशी, गुलफिशा, हिमांशु, ईशानी, प्रांजलि। हिमांशु समझ में आ रहा है आपको? सुनीता, प्रांजलि, उमेद। सो दैट इज एज अगेंस्ट द प्रपोजर। तो यहां पे दो रूल है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस में, दो रूल है, एज अगेंस्ट द प्रपोजर एंड एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। तो दो अलग अलग समय पे ये दोनों बाउंड हो रहे हैं। सबसे पहले बाउंड हो रहा है प्रपोजर, उसके बाद फिर बाउंड होगा एक्सेप्टर, ठीक है। अब देखो एक्सेप्टर कब बाउंड होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप फर्दर पढ़ोगे तो इट सेज एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर when it comes to the knowledge of the proposer, कि जब प्रपोजर को मिल जाएगा। आप सपोज प्रपोजर को मिल रहा है कब? ए ने बी को दिया, बी ने ए को दिया, ये 5th January को दिया था ना। अब ये पहुंच रहा है सपोज 7th January को 10 a.m. सो ऑन 7th January 10 a.m. बी विल बी बाउंड बाय हिज एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो यहां पे कम्युनिकेशन of acceptance as against the acceptor is on 7th January 10 a.m. ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग डेट पर आप बाउंड हो रहे हो, ठीक है, राइट। प्रपोजर विल बी बाउंड द मोमेंट द लेटर इज पोस्टेड, द मोमेंट द लेटर इज डिस्पैच्ड, ओके, एज इट इज आउट ऑफ हिज पावर। बट अगर मैंने एक्सेप्टेंस लिख के अपने टेबल पे रख दिया तो प्रपोजल बाउंड थोड़ी होगा। क्यों? क्योंकि वो मेरी अभी पावर में ही है ना, राइट, अभी मेरे पास ही है, राइट। इट इज नॉट पोस्टेड, इट इज नॉट पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। बट जैसे ही मैंने उसको ट्रांसमिशन में पोस्ट करा, देन इट विल अमाउंट टू व्हाट, दैट इट इज बियॉन्ड माई पावर एंड नाउ द प्रपोजर विल बी बाउंड। तो सबसे पहले प्रपोजर विल बी बाउंड when the letter of acceptance is posted, okay, and when it reached to the proposer, then acceptor will be bound. तो ये अलग अलग समय क्यों दे रखा है बताओ? Why they are having two different times, Mr. Karthike? What could be the reason?
टेक मच टाइम, लेटर तो हम पोस्ट कर रहे हैं तो टाइम लग रहा है, अगर कल को वो एक्सेप्ट कर, ये उठा वो मना कर देंगे या वो दूसरे के साथ कांटेक्ट कर लें, तो फिर वो क्या करेगा बेचारा। मिस्टर शरद सही कह रहे। अच्छा प्रिया, नहीं यहाँ पे डोंट यू थिंक कि एक्सेप्टर को ज्यादा रिलैक्सेशन मिल रही है कि वो थोड़े समय बाद बाउंड हो रहा है ना। एक्सेप्टर तो यहाँ पे 7 तारीख को बाउंड हो रहा है और प्रपोजर बाउंड हो रहा है 5 तारीख को। तो यहाँ पे डोंट यू थिंक देयर इज अ पार्शियलिटी दे आर डूइंग। इंग्लिश डॉक्ट्राइन है, बोलो बोलो। वो नेम में नंबर अगर मैंने पढ़ा हुआ है ये, तो उसको थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा दिया जाता है, केस आउट एंड चिराग वैसे मेरे पॉइंट समझ गए आप? दीपांशी, प्रिया, आप मेरा पॉइंट समझ गए। मेरा ये कहना है कि यहाँ पर एक्सेप्टर को थोड़ी ज्यादा फ्रीडम दी जा रही है कि अगर उसको अपना एक्सेप्टेंस रिवोक करना है तो 7 तारीख से पहले रिवोक कर सकता है, बट प्रपोजर 5 के बाद रिवोक कर ही नहीं सकता अपना प्रपोजल, है ना। तो मतलब एक एडवांटेज है एक्सेप्टर को। तो ये एडवांटेज इसलिए है क्योंकि प्रपोजर जो है वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड कर रहा है, एक्सेप्टर थोड़ी डिसाइड कर रहा है। एक्सेप्टर तो हाथ जोड़ के एक्सेप्ट कर देगा, क्योंकि अगर उसने डिसाइड करने लगा तो फिर वो काउंटर ऑफर बन जाएगा ना, राइट। अगर एक्सेप्टर ने भी अपना टर्म ऐड कर दिया तो काउंटर ऑफर बन गया, और काउंटर ऑफर में केस फ्लो बता दो मुझे। चलो वेट, मिस्टर क्या नाम है आपका? कार्तिक, बताओ। कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल अबाउट केस लॉज। यस मिस्टर चिराग, बताओ। वेरी गुड हो गया। तो हाइट वर्सेस रेंच है, जहां पर इफ देयर इज अ स्लाइट चेंज व्हाइल एक्सेप्टिंग देन इट विल बिकम अ काउंटर ऑफ। ठीक है। तो यहां पर व्हाट आई एम सेइंग इज दैट द एक्सेप्टर इज गिविंग अ लिटिल बिट ऑफ प्रिविलेज, little bit of advantage. What kind of advantage? Since he was not there to decide the terms and conditions, he has to accept whatever the proposal is there, but he is getting the advantage of revocation, कि वो बाद में revoke कर सकता है, but proposal bound हो जाएगा। समझ में आया मिस्टर कार्तिकेय? शरद समझ में आ गया? प्रिया, दीपांशी, चिराग, गुलफिशा, हिमांशु, ईशानी, प्रांजलि, सुनीता, उमेद, टेल मी प्लीज टेल मी, क्लियर हुआ? हालांकि ये अभी लिखवाऊंगा ये सब चीजें, एक पॉइंट लिखो, चलो राइट डाउन दैट सेक्शन 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट गिव्स provisions relating to completion of communication of proposal, acceptance and revocation. ओके okay. एक और हेडिंग बनाना, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल। अब इसमें लिखो, प्रपोजल इज कंप्लीटेड, proposal is completed when it comes to the knowledge of the offeree, when it comes to the knowledge of offeree। ओके, कि जब सामने वाले को पता चल जाता है तो प्रपोजल का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है। तो यू हैव टू रिमेंबर कि वो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है।
right? In PT you will get such type of questions कि when communication of acceptance is completed as against the acceptor, बता दो मिस्टर कार्तिकेय, as against the acceptor, डेट बताना, डेट यहाँ पर इस क्वेश्चन में, communication of acceptance as against the proposer. मैंने प्रपोजल पूछ लिया उनसे, I can ask questions, right? I have a liberty to ask. बता दो प्रपोजल as against the proposer कब कंप्लीट हुआ है? 5th Jan. अच्छा ठीक, ठीक है, गुड। 5th को पहुंचा ना उधर, 5th को उसने डिलीवर करा ना, ठीक है, गुड। यही आपको ना कंफ्यूजिंग पूछ लेंगे क्वेश्चन, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद द सेक्शंस, राइट? एक और पॉइंट लिखो इसमें, राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, unless a proposal is communicated, unless a proposal is communicated to the person, to the person to whom it is made, to whom it is made, it is incomplete and inconclusive. It is incomplete and inconclusive. Therefore, it has no effect. एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, शरद से पूछता हूं, शरद अगर प्रपोजल मैंने दिया बट आपकी नॉलेज में नहीं है और आप बाद में उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, आपको बाद में पता चला, तो कौन सा क्वेश्चन, कौन सा केस लॉ लगेगा यहाँ पे और क्या इफेक्ट होगा? हाँ मैंने एक ऑफर दिया है, सपोज मैंने आप ही कोई ऑफर दिया, एक पर्टिकुलर ऑफर दिया, बट आपको पता भी नहीं है और बाद में आपने वो काम कर दिया, आपको पता चला अरे ऑफर दे रखा था, आपने अब एक्सेप्ट कर लिया, कौन सा वाला केस? वर्सेस गौरीदत्त, yes, lalban shukla versus गौरीदत्त. So that is what is required, is that the proposal should be in your knowledge. If there is no proposal, if you are unaware about the knowledge of the proposal, there is no acceptance. Lalman Shukla versus Gauridat, 1913. Which high court? बता दो। इलाहाबाद हाई कोर्ट। वेरी वेरी गुड। एक और पॉइंट लिखो, राइट डाउन वन मोर पॉइंट। Therefore, as a result, therefore, as a result, an acceptance without knowledge of the proposal, an acceptance without knowledge of the proposal is not an acceptance, is not an acceptance and does not result into contract, and does not result into a contract. Okay, right? Mr. Karthikeya, clear? Mr. Sharad, Spriya, Dipanshi, Chirag, गुलफिशा, ईशानी, प्राजनी, सुनीता, उमेद। अभी कुछ और स्टूडेंट, अभी मैसेज आया दैट दे आर नॉट फीलिंग वेल, तो कई सारे बच्चे अभी बीमार हैं, तो यू ऑल्सो काइंडली टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ठीक है? ये अभी मौसम थोड़ा ऐसा चल रहा है, थोड़ा बीमारी का, तो यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, राइट? एक और पॉइंट लिखो, नेक्स्ट मेक अ हेडिंग ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। अभी देखो
अभी बस मैंने आपको जनरल रूल बताया है, इसमें भी इंस्टेंटेनियस एंड पोस्टल रूल अभी आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है राइट। इसमें लिखो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। सेक्शन 4 पैरा 2 gives rules relating to gives rules relating to completion of acceptance. Section 4 para 2 is further divided. Section 4 para 2 is further divided in two subparas. Subpara 1 relates to completion of communication. Relates to completion of communication of acceptance as against the proposer. Subpara 2 gives the provision. Subpara 2 gives the provision relating to completion of communication of acceptance as against, tell me which, as against the Chirag. Subpara 2 as against the presence of mind, as against the acceptor. Okay, next para. For binding contract, acceptance is required to be communicated. Acceptance is required to be communicated in some understandable form to the proposer. This is because the proposer is entitled to know whether a contract is whether contract has been concluded by the acceptance and it would be unfair to hold him bound by an acceptance of which it has no knowledge. Okay, तो बेसिकली कम्युनिकेशन होने से क्या होता है
कि आपका वो कंप्लीट हो जाता है। क्या कंप्लीट होगा? या तो प्रपोजल, या तो एक्सेप्टेंस, या तो रेवोकेशन। ठीक है, प्रपोजल कब कंप्लीट होगा? जब सामने वाले को वो रिसीव हो जाएगा, तब कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट होगा। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा? उसमें दो केसेस हैं। एज अगेंस्ट द प्रपोजर, when it is put in the course of transmission and it is out of his power, right? And second, as against the acceptor, when it is comes to the knowledge of proposer. Okay, right? Is it clear? तो एक बार एक्सेप्टेंस की नॉलेज आ गई है तो इट बिकम्स अ कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट, और जब वो कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, देन यू हैव टू परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, यू हैव टू परफॉर्म योर ड्यूटी। इट इज योर ड्यूटी टू परफॉर्म, वेयर इट इज रिटन विथ सेक्शन। गुड। Section 37 talks about the same, that is performance of a contract, right? कि वादा करा है तो निभाना पड़ेगा। Is it clear? Tell me. अब देखो, communication is of two types. Now let us discuss instantaneous and non-instantaneous, that is inter presentis and inter absentis. ठीक है, right? यहाँ तक clear है? Yes, give me a thumbs up so that we can proceed further. Tell me, clear है? शरद, प्रिया, चिराग, तभी ठीक नहीं है आपकी? थोड़ा लग रहा है, फीवर तो लग रहा है? कोई बात, ये क्लास के बाद फिर आप रेस्ट करना, दवाई लेना, ठीक है? राइट। नाउ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। अब देखो, दैट कैन बी डन इन टू टाइप्स। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इन टू टाइप्स। दो टाइप की हो सकती है एक्सेप्टेंस, या तो इंटर प्रेजेंटिस, इंटर प्रेजेंटिस, या इंटर एब्सेंटिस। अब नाम से पता चल रहा है, इंटर प्रेजेंटिस मतलब क्या? व्हेन बोथ द पार्टीज आर आमने सामने, राइट? व्हेन बोथ द पार्टीज आर प्रेजेंट, व्हेन बोथ द पार्टीज आर प्रेजेंट, ओके, at same time, okay, but not necessary that physically present. It is not required that you have to be physically present. That can be done virtually also. Virtually as in on phone, कि मैंने फोन मिलाया कहां पर? कश्मीर में, हालांकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, बट वी आर इंटर प्रेजेंटिस। ठीक है, सो टॉकिंग ऑन फोन वेयर वी कैन हियर डायरेक्टली, राइट? ओके, देयर इज नो एजेंसी बिटवीन अस, देयर इज नो टाइम लैग, राइट? कोई डिफरेंस थोड़ी है। तो टॉकिंग ऑन फोन, या फिर आप फिजिकली प्रेजेंट हो, दैट कैन बी फिजिकल प्रेजेंट, और टॉकिंग ऑन फोन, जो भी इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन हो सकता है, मोड हो सकता है, शरण, ठीक है, राइट? उसे बोलते हैं इंटर प्रेजेंटस, दैट द पार्टीज आर इंटर प्रेजेंटस। तो यहां रूल डिफरेंट है, over here it has a different rule, whereas when we talk about inter absentis, where there is no instantaneous communication, no instantaneous communication, okay, is possible. No instantaneous communication is possible, that is, the communication is being done through letters, through messages, right? Communication is being done through letters, right? Through by post, okay? That you are not talking to each other directly, rather you are talking through some agency. There is some third parties involved between you
एंड द अदर पर्सन। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में, इन बोथ द टाइप, इंटर प्रेजेंटिस एंड इंटर एब्सेंटिस, द रूल्स आर डिफरेंट, राइट? So over here the rules are different. Okay, और रूल्स डिफरेंट है तो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो डिफरेंट। प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो डिफरेंट। ठीक है, राइट? जैसे कि अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने फोन करा, ठीक है, विल यू बाय माय वॉच? ठीक है, कि क्या आप मेरी घड़ी खरीदोगे? कहां से? दिल्ली से टू कानपुर। ठीक है मिस्टर शरद, कानपुर। ठीक। तो ए ने बी को फोन करा कि क्या आप मेरी घड़ी खरीदोगे दिल्ली से कानपुर, फोन करा। अब बी ने एक्सेप्ट कर लिया, राइट? बी ने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ बोलता हाँ जी आई एक्सेप्ट। ओके, सो नाउ द एक्सेप्टेंस इज पुट फ्रॉम कानपुर, राइट? कानपुर से उसने एक्सेप्टेंस दिया, और वो एक्सेप्टेंस सुनाई कहां दिया? वो दिल्ली में सुनाई दिया, राइट? तो यहां पर प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? दिल्ली होगा या कानपुर होगा, या दोनों जगह होगा, या सिर्फ कानपुर होगा दिल्ली नहीं होगा, या सिर्फ दिल्ली होगा कानपुर नहीं होगा? विच इज द प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? ये हमें डिसाइड करना है। दिस इज व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम और इंट्रोड्यूस थ्रू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। बता दो। where the acceptance is communicated. That is the place of Acceptance is communicated. In this example, which is the place where acceptance is communicated? conflict. Okay. क्या लगता है? स्प्रिया है? दोनों गुड। दीपांशी दोनों गुड। उमेद says कानपुर is a place of contract. Okay. And Mr. कानपुर, कानपुर। ईशानी से सर दिल्ली एज अ प्रपोजल वाज फ्रॉम दिल्ली। अच्छा, ईशानी की वजह से दिल्ली होगा, क्यों? क्योंकि दिल्ली में प्रपोजल दिया गया था, दिल्ली से प्रपोजल दिया गया था, इसलिए दिल्ली होगा। कुछ बच्चे बोल रहे सर कानपुर होगा, कुछ बच्चे बोल रहे सर दोनों होगा। ऐसे दोनों नहीं होगा, नो, इल्ले, दोनों तो नहीं होगा। यहाँ पे केस लॉ है, शायद सुना होगा अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है तो। गिरधारी लाल वर्सेस भगवान दास, सुना है? नहीं सुना ना? याद भी नहीं आ रहा होगा। सुना है आपने? सुना है बट याद नहीं आ रहा सर मुझे। वेरी गुड हो गया तो। एंटोर्स लिमिटेड वर्सेस माइल्स फार ईस्ट कॉर्पोरेशन, ये भी नहीं सुना होगा। सुना है ये वाला? ये भी नहीं सुना। गुड, चलो मैं बताता हूँ। देखो यहां पर जब बी ने बोला आई एक्सेप्ट, ठीक है, जब बी ने बोला आई एक्सेप्ट, तो उस वक्त तुरंत उसी वक्त ए ने भी तो सुन लिया, है ना? राइट? व्हेन बी सेज आई एक्सेप्ट, दैट इज द सेम टाइम वेयर ए एंड बी बोथ आर बाउंड। अब बी भी रिवोक थोड़ी कर सकता है, बी अपना रिवोकेशन दे नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सामने वाले ने सुन लिया। तो जहां उसने एक्सेप्टेंस सुना, वहां प्लेस विल बी द प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज द प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि यहां पे उसने एक्सेप्टेंस सुना है, और जब यहां सुना है तो यहां प्लेस, यहां पे कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हुआ है। समझ में आया? ओके,
यहाँ पे केस लॉ है, केस लॉ पे भी अभी हम पढ़ेंगे। तो जब ए ने सुना आई एक्सेप्ट, तभी तो कंक्लूड होगा कॉन्ट्रैक्ट, है ना। अगर ए ने नहीं सुना होता तो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? जब ए पर पहुंच जाएगी, क्या पहुंच जाएगी? एक्सेप्टेंस, है ना। समझ में आ रहा है कार्तिक, कार्तिके एंड प्रिया, दीपांशी, चिराग, शरद, गुलफिशा, ईशानी, प्रांजलि, उमेद, एवरीवन, सुनीता, टेल मी। तो यहां पर द प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल बी दिल्ली। क्यों? क्योंकि दिल्ली इज द प्लेस वेयर ही हर्ड द एक्सेप्टेंस, और जब एक्सेप्टेंस सुनाई जाएगी तब कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब एक्सेप्टेंस सुनाई नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं। समझ में आया? तो इंस्टेंटेनियस रूल में द प्लेस वेयर द एक्सेप्टेंस इज हर्ड विल बी द प्लेस वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड। तो उसने सुना कहां पे? दिल्ली में सुना, राइट। तो दिल्ली विल बी द प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नॉट द जयपुर, नॉट द कानपुर। ठीक है, इज इट क्लियर? टेल मी। बट अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल जब इसने आई एक्सेप्ट बोला तो ऊपर से एक महिंद्रा लॉ अकेडमी का एक जेट एरोप्लेन जा रहा है, राइट, और ड्यू टू दिस नॉइज ए कुडंट हियर, तो will it amounts to a valid acceptance? Tell me, will the contract be concluded, Mr. कार्तिकेय? क्यों? उसने एक्सेप्टेंस तो दिया है ना। प्रिया, दीपांशी, कार्तिकेय, वाई? communication को हुआ ही नहीं। तो यहां पर when B says I accept, at the same time A के वहां पे एरोप्लेन गुजर रहा था और उसमें नॉइज की वजह से A couldn't hear, so the communication of acceptance is not completed. So since the communication of acceptance is not completed, there is no contract. समझ में आया? Is it clear? अब एक केस लॉ लिखो, भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल, सुप्रीम कोर्ट 1996, लैंडमार्क जजमेंट ऑन प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल। जैसे कुछ केस लॉज ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पेट केस लॉज हैं, ये आप कभी भूलने की कोशिश भी मत करिएगा। जैसे मोहरी बीबी आप नहीं भूल सकते, राइट। लालबन शुक्ला आप नहीं भूल सकते, हाइड वर्सेस रेंच नहीं भूल सकते, हैडले वर्सेस बैक्सेंडल नहीं भूल सकते आप, राइट। ओके, हार्वी वर्सेस पेसी नहीं भूल सकते, कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल हो गया, राइट। क्या हुआ यंग मैन? तबीयत ठीक नहीं है आपकी? फादर को फोन करूं आपके? अच्छा, कह रहे हैं सर फादर को फोन करने से मैं ठीक हो जाऊंगा। तो ऐसे ही भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल है, ये कुछ जजमेंट्स हैं दैट यू शुड नॉट एवर फॉरगेट, राइट। दीज आर द लैंडमार्क। अब इसमें जजमेंट जो जजेस थे उनके भी नाम लिख लो, बिकॉज दे आस्क इन पीटी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन दैट हु वाज द जजेस। सो मेजॉरिटी जस्टिस में देयर आर टू जस्टिस, मेजॉरिटी में जस्टिस वांचू एंड जस्टिस शाह। माइनॉरिटी में लिख लो, माइनॉरिटी एज इन डाइसेंटिंग जजमेंट, राइट, जस्टिस हिदायत उल्ला। अच्छा, जस्टिस हिदायतुल्लाह के बारे में एक और चीज मुझे बताओ। वेट 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 वेट, शरद, आइडिया तो लग गया हो आपको? प्रिया, याद नहीं आ रहा, वेरी गुड, हो गया ये तो। दीपांशी,
तो इसमें पेक्युलैरिटी क्या है? यस, ही बीइंग अ चीफ जस्टिस बिकम्स अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। एक प्रोटोकॉल होता है कि अगर प्रेसिडेंट नहीं है, देन हु विल बी द एक्टिंग प्रेसिडेंट आफ्टर दैट, आफ्टर हिम? यस, सो देयर इज अ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या है कि प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट भी ऑफिस में नहीं है, कहीं घूमने गए हुए हैं मतलब, तो द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, if there is no chief justice of India available due to health or some any other issue, then the senior most judge of the Supreme Court will be the acting president of that time, ठीक है। तो this is the hierarchy basically, ठीक है, राइट, ओके। अब इसमें सुनो, फैक्ट सुनना है इसके फैक्ट्स, कि भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल में हुआ क्या। कि जो प्रपोजर था वो अहमदाबाद से उसने एक एसटीडी कॉल करा, ठीक है, राइट। प्रपोजर ने अहमदाबाद, और जो एक्सेप्टर वो खामगांव, ठीक है, राइट। अब प्रपोजर ने एसटीडी कॉल करा अहमदाबाद से खामगांव पर, ठीक है, और खामगांव से उसने एक्सेप्ट कर लिया, अहमदाबाद पे उसने सुन लिया। तो यहां क्वेश्चन उठा दैट विच इज द प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि अगर डिस्प्यूट हो जाता है, कोई ब्रीच करता है, तो आपको सूट फाइल करना पड़ेगा, और सीपीसी में तो टेरिटोरियल जूरिसडिक्शन लिखा हुआ है, बट प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ढूंढना इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है। प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से ही तो एक, प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ पार्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, कि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट कब बना, कहां बना, राइट, कहां से कहां आना था सामान, दैट इज अ पार्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। तो यहां पर क्वेश्चन उठा, अगर कोई ब्रीच कर देता है पार्ट, अब पार्टी अगर ब्रीच कर देता है, तो आप सूट कहां फाइल करोगे, खामगांव करोगे या अहमदाबाद करोगे, दैट इज द क्वेश्चन। तो अभी जितना मैंने बताया उसके अकॉर्डिंगली बताओ, विच इज द प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओवर हेयर मिस्टर कार्तिक, वाई? Communication of acceptance is being heard at Ahmedabad, right? Okay. So phone पर conclude हुआ contract. So therefore the place of contract will be the Ahmedabad where the acceptance is actually heard. Okay, right? चिराग समझ में आ रहा है? Good. एक point लिखो इसमें. Parties inter presentis, parties inter presentis are able to communicate, are able to communicate with each other, with each other instantly. Therefore, where the parties, therefore, where the parties are inter presentis, are inter presentis, this is known as instantaneous rule. This is known as instantaneous rule, because the moment, the acceptance is spoken, the acceptance is spoken, the moment the acceptance is spoken, it is heard. Therefore, it results into a valid contract. Therefore, it results into
a valid contract. Okay, right? Such a contract is concluded. Such contract is concluded when the acceptance reaches, when acceptance reaches to the proposer. राइट कि कॉन्ट्रैक्ट कब कंक्लूड होगा, जब एक्सेप्टेंस प्रपोजर तक पहुंच जाए. और प्रपोजर तक पहुंच रहा है मतलब जब उसने सुन लिया. और कहां सुना उसने? उसने अहमदाबाद में सुना. सो द अहमदाबाद विल बी द प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, राइट, ठीक है. अब ये जो भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल जजमेंट है, इट इज टोटली बेस्ड अपॉन इंग्लिश जजमेंट. अब ये भी पूछा जाता है पीटी में. दैट इज, एक और केस लॉ लिखो, एंटोर्स लिमिटेड, एंटोर्स लिमिटेड वर्सेस माइल्स फार ईस्ट कॉर्पोरेशन. That is 1955 English case law delivered by Lord Denning. ये भी पूछ लेते हैं कि कौन से जज ने डिलीवर करा था. सो दैट इज लॉर्ड डेनिंग. ओके, तो ये जो जजमेंट है भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल वाली जजमेंट, ये भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल जजमेंट इज टोटली बेस्ड अपॉन दिस. तो सुप्रीम कोर्ट हाईली रिलाइड अपॉन दिस जजमेंट. ठीक है. अब यहां पर फैक्ट सुन लो इसके, एंटोर्स लिमिटेड वर्सेस माइल्स फार ईस्ट कॉर्पोरेशन के फैक्ट्स. हुआ क्या कि लंदन से एम्स्टरडैम इन्होंने एक टेलेक्स करा. टेलेक्स कम्युनिकेशन आपको पता है, थोड़ा सा आइडिया? जैसे पहले टेलीग्राम होता था, टेलीग्राम करा है, बट टेलीग्राम इट्स नॉट इंस्टेंटेनियस. आज टेलीग्राम करे, बाद में उसको रिप्लाई देगा टेलीग्राम से. तो टेलीग्राम एक कम्युनिकेशन मीडियम था. ऐसे ही टेलेक्स, मैं लिखता हूं टेलेक्स. टेलेक्स एक इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन मीडियम या मेथड था. ठीक है, राइट. तो यहां पे पार्टी ने क्या करा, लंदन से एम्स्टरडैम, बताओ एम्स्टरडैम इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? प्रियम, दीपांशी, शरद, कहाँ जाऊं मैं, कहाँ जाऊं? आप फिर बोलोगे इंडिया की का जो वो है, क्या नाम है, कैपिटल, वो मेलबर्न बोल दोगे आप. मेलबर्न ही है ना ऑस्ट्रेलिया की. अच्छा फिर ठीक है. यस मिस्टर कार्तिक, नीदरलैंड्स. ओके, नीदरलैंड्स. तो यहाँ पे कंपनी ने लंदन से एम्स्टरडैम टेलेक्स करा और प्रपोजल, और उसी का प्रपोजल टेलेक्स के थ्रू एक्सेप्टेंस आया. तो यहां पर कोर्ट ने ये बोला कि प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल बी द लंदन. कोर्ट ने, लॉर्ड डेनिंग ने ये बोला कि कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हुआ है लंदन पे. क्यों? क्योंकि पार्टीज वर इंटर प्रेजेंटिस, दैट इज इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन, और टेलेक्स को इंस्टेंटेनियस माना गया है. So therefore, the place of contract will be the London. Okay, Karthik, Dipanshi, Priya, Chirag, Sharad, Umed, Sunita, Pranjali, Ishani, Gulfisha, everyone, please tell me. तो इसमें लिखो, write down. The plaintiff traded. The plaintiff traded from London and telexed an offer. टेलेक्स मतलब वो एक इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन है, जैसे फोन होता है ना, हेलो जी कैसे हो, बोल रहा मैं ठीक हूँ. ठीक है, राइट. टेलेक्स
an offer to a company in Amsterdam. Okay. Notification of acceptance of acceptance notification of acceptance was received by the proposer. Notification of acceptance was received by the proposer by telex in London. ठीक है. In this case, it was held by Lord Denning. In this case, it was held by Lord Denning that in cases of instantaneous communication, that in cases of instantaneous communication and acceptance is communicated when it is actually received by the proposer and therefore the contract resulting thereupon was held to be made in London. Was held to be made in London. Was held to be made in London. Okay. तो जहां पर आपने एक्सेप्टेंस सुना, दैट विल बी द प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ओके. तो कौन सा केस है? एंटोर्स लिमिटेड वर्सेस माइल्स फार ईस्ट कॉर्पोरेशन. एंड ऑन दिस केस लॉ, दिस जजमेंट बाय सुप्रीम कोर्ट, गिरधारी लाल वर्सेस भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल जजमेंट इज बेस्ड. ठीक है, राइट. जिसमें कौन जजेस है? प्रिय, भगवान दास और एक और है, बताओ. कार्तिकेय, यू शुड रिमेम्बर. देखना नहीं है? अब तो देख लिया. शरद, देख लिया आपने भी? अच्छा, चलो, आई रिलाई अपॉन यू. ठीक है, लिखो आगे. लिख. इन केसेस ऑफ इंस्टेंटेनियस रूल, इन केसेस of instantaneous rule, the proposer can revoke his proposal, but the acceptance cannot be revoked. But the acceptance cannot be revoked. Now, अब आप ये स्टेटमेंट मुझे समझा दो, शरद. In cases of instantaneous rule, proposer can revoke his proposal. ठीक है, बोलो बोलो. पेज किया कि हाँ ये प्रपोजल है, सर फिर नेक्स्ट पेज में भी बोल सकते हो कि मतलब कैंसिल.
बट अगर मतलब जो जो क्रिएट कर रहा है, जो क्रिएट कर रहा है, वही उसे कैंसिल भी कर देता है। बट एक बार एक्सेप्ट करने के बाद फिर आप अगर कैंसिल करते हो तो फिर वो ठीक है। ठीक है, समवॉट मिस्टर कार्तिकेय। once the proposal is given, it can be revoked before it is accepted. And further, acceptance cannot be removed. What does it mean? If I contemplated my acceptance, I cannot revoke it. The needs of instantaneous communication. क्योंकि अगर तो हो नहीं सकती ना उसके लेटर वाले में भी क्या होता है कि अगर पासपोर्ट मोड से हम कर दें, रिवोकेशन पहले आ गई, तो दैट इज रिवोक्ड। देखो, इंस्टेंटेनियस रूल में ना, अगर मैंने आपको प्रपोजल दिया है तो मैं अभी आपके सामने हूं या फोन पर हूं, अभी आपने एक्सेप्टेंस नहीं करा, तो आई कैन रिवोक माई प्रपोजल। मैं बोलूँ अरे रुक जाओ, मेरे को नहीं बेचना आपको। मैं बोलूँ आपको फोन पर, घड़ी क्या आप मेरी घड़ी खरीदोगे? अभी आप सोच रहे हो खरीदूं खरीदूं नहीं खरीदूं नहीं खरीदूं, मैंने आपके बोलने से पहले मैंने आपको बोल दिया कि नहीं, आई विल नॉट सेल। तो दैट इज आई कैन रिवोक माई प्रपोजल। बट एक बार उन्होंने एक्सेप्टेंस बोल दिया, then it cannot be removed. Why? Because the moment he said acceptance, I have heard it. जैसे ही इन्होंने एक्सेप्टेंस दिया मैंने सुन लिया, तो उसके बाद तो देर कैन नॉट बी अ रेवोकेशन। ठीक है, इज इट क्लियर? इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। लिखो, दिस इज बिकॉज the moment the proposer hears the acceptance, the moment the proposer hears the acceptance, the contract concludes. The contract concludes, and therefore the acceptor has no chance of revoking, the acceptance. तो आप ये समझ लो कि इंस्टेंटेनियस रूल में आप एक्सेप्टेंस को रिवोक नहीं कर सकते। आप प्रपोजल को कर सकते हो जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होता, बट आप इंटर एब्सेंटिस मतलब पोस्टल रूल में आप एक्सेप्टेंस को भी रिवोक कर सकते हो, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? राइट, टेल मी नाउ। ये यहां तक क्लियर है सबको? शुड आई डिक्टेट फर्दर? या ब्रेक तो नहीं चाहिए? अभी ब्रेक चाहिए? चला तब ठीक है। कार्तिकेय, ब्रेक? नो ब्रेक? नो ब्रेक नवंबर, राइट? We'll celebrate this 1 or 2 months before, right? This is September, so we are celebrating no break November. आगे लिखो place of contract. Make a heading of place of contract. अब इसमें लिखना, the Indian Contract Act does not expressly deal with the place of contract, of contract. Section 20 of CPC, अच्छा आपने CPC पढ़ा है? पढ़ा CPC थोड़ा बहुत? देखो CPC में ना, इट इज बेसिकली प्रोसीजरल, वो तो उसके नाम में भी लिखा हुआ है, वाओ, है ना? क्या एक्स्ट्रा चीज मैंने आपको बताई। सो CPC इज अ प्रोसीजर, राइट? CPC में प्रोसीजर में एक वो जूरिसडिक्शन के बारे में बात कर रखी है कि कौन सा कोर्ट ट्राई करेगा। हालांकि सबसे छोटा कोर्ट जो कॉम्पिटेंट है वो ट्राई करता है। देखो 3 तरह की जूरिसडिक्शन होती है।
एक होता है पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, पैसे वाली बात, कि क्या मैं 50 लाख तक का मैटर देख सकता हूं या मेरा सुपीरियर कोर्ट देखेगा, तो ये होती है पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। एक होता है सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन, कि क्या मैं डाइवोर्स वाले मैटर देख सकता हूं या नहीं देख सकता, ठीक है, दैट इज सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। एक होता है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, कि क्या इसकी प्रॉपर्टी मेरे एरिया में है या नहीं, राइट। प्रॉपर्टी जिस एरिया में होती है उस एरिया के कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होता है, ठीक है, राइट। जुरिस्डिक्शन बेसिकली कॉम्पिटेंसी ऑफ अ कोर्ट टू ट्राई अ सूट, ठीक है, कि कोर्ट ट्राई कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। तो सीपीसी में सेक्शन 16 से लेकर सेक्शन 20 तक जुरिस्डिक्शन लिखा हुआ है। 16 से 19 तक इट इज रिलेटेड टू सम प्रॉपर्टी और सम टॉट, ठीक है। सेक्शन 20 में लिखा हुआ है विच इज रिलेटेड टू वेयर द डिफेंडेंट एक्चुअली रिजाइड्स, जहां डिफेंडेंट रहता है, वर्क करता है या बिजनेस करता है। क्योंकि अगर मुझे सूट फाइल करना है तो मुझे डिफेंडेंट के एरिया में जाके फाइल करना पड़ेगा, ठीक है, राइट। अगर डिफेंडेंट ने गलत करा है तो मुझे डिफेंडेंट इक्विटी एक्ट्स इन पर्सोनेम, एक मैक्सिम है, शायद मैंने आपको पढ़ाया होगा सीपीसी में। इक्विटी एक्ट्स इन पर्सोनेम मतलब क्या, जहां डिफेंडेंट रहता है मुझे वहां पर, या डिफेंडेंट रहता है, वर्क करता है या बिजनेस करता है, इन 3 जगह पर मैं केस कर सकता हूं, या फिर जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। तो सेक्शन 20 बात करता है डिपेंडेंट रिजाइड्स, कैरीज ऑन बिजनेस या वर्क फॉर गेन या वेर एवर द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस। तो यहां पर प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, तो अगर जहां कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो एक पार्ट है कॉज ऑफ एक्शन का, ठीक है। कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है मिस्टर कार्तिकेय? कॉन्ट्रैक्ट की बात ले लेते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे फॉर्म हुआ वो कॉज ऑफ एक्शन हो गया एक तरह से हमारा, वो या कॉज फिर ऑफ एक्शन थोड़ी है, सॉरी कोई ब्रीच हुआ उसका वो। कॉज ऑफ एक्शन इज बेसिकली क्या, दैट आई हैव अ बंडल ऑफ लीगल राइट्स, बंडल ऑफ लीगल राइट्स, कि मेरा लीगल राइट है, ठीक है, और आपने उस लीगल राइट को वायलेट कर दिया, दैट लीड्स टू अ कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है। और यहां पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ दिल्ली में, तो दिल्ली में कॉन्ट्रैक्ट होना पार्ट, ये जो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है इज अ पार्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, तो इसलिए इट इज मैंडेटरी नेसेसरी to know that which place will be the place of contract, so that later on if any dispute arises then that place will be the place of jurisdiction, ठीक है। जैसे मान लो आपने हमारे यहाँ पे एडमिशन ले लिया, तो आप हमारे एडमिशन फॉर्म में लिखोगे, लास्ट में लिखा हुआ रहता है साइन और डेट और प्लेस, और वहां आप क्लॉज में पढ़ोगे लिखा रहेगा सब्जेक्ट टू दिल्ली जुरिस्डिक्शन। मैंने लिखा हुआ है, मैं थोड़ी जाऊंगा नागालैंड, आपने सोचो नागालैंड से हमने नागालैंड पे केस कर दिया कि सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे, राइट, बट आई हैव रिटन सब्जेक्ट टू दिल्ली जुरिस्डिक्शन, तो दिल्ली जुरिस्डिक्शन, दिल्ली कोर्ट विल हैव अ जुरिस्डिक्शन, तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा दिल्ली में हुआ है, ठीक है, राइट। अब इसमें लिखो सेक्शन 20 ऑफ सीपीसी प्रोवाइड्स दैट provides that a suit can be filed in the court within the territorial jurisdiction, within the territorial jurisdiction of which a part or the whole of which a part or the whole of the cause of action, whole of the cause of action arises, ठीक है। नेक्स्ट पैरा, in a suit of contract, in a suit of contract
The making of the contract is a part of cause of action. The making of the contract is a part of cause of action. Is part of cause of action for filing the suit. For filing the suit. Therefore, determining the place of contract. Therefore, determining the place of contract. The place of contract is very important. Is very important. Since the Indian Contract Act, is silent on this, the Supreme Court has through a number of judgments evolved the place of contract, evolved the place of contract by interpreting section 4 para 2 and para 3, and with help of English law, English case law. Write down the case भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल. हालांकि ये आपने लिख लिया है ना, फिर भी चलो लिख लो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे. भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल 1996 Supreme Court. Majority judges Justice Vanchu and Justice Shah, and minority or dissenting judgment given by Justice Hidayatullah. Right? Tell me, in which year the Justice Hidayatullah was made a president of India? And was he only once made a president, or twice, or thrice, or 4 times? ये भी बता दो. Miss Priya, Sharan, Karthikeyan, no idea. So he was made twice. He was the president made twice. Okay, but year I am also not able to recall. आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है. अब ये लिख लो भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल, इसमें जजेस के नाम लिख लेना. उसके आगे लिख लो दिस जजमेंट वाज रिलाइड ऑन इंग्लिश केस, दैट इज दिस जजमेंट was relied on English case law, English case, that is Entors Limited versus Miles Far East Corporation 1955. Okay, delivered by Lord Denning. Is it clear? अब इसके केस लॉ लिखो, नहीं इसमें मतलब फैक्ट्स लिखो, मतलब भगवान दास वाले केस में लिखिएगा. In this case, the plaintiff made an offer. The plaintiff made an offer from Ahmedabad on a STD call.
on a STD call. The defendant accepted the offer. The defendant accepted the offer at Khamgaon. At Khamgaon. In this case, the dispute arose. In this case, the dispute arose as to the jurisdiction, as to the jurisdiction, as to the jurisdiction of the court, in case of a contract, in case of the contract concluded on phone, that is an instantaneous communication. Instantaneous communication. Okay, next para. The plaintiff contended that since the offer was made, at Ahmedabad, and also the acceptance was received at Ahmedabad, and also the acceptance was received at Ahmedabad. The jurisdiction should be of the courts at Ahmedabad. The jurisdiction of the court should be at Ahmedabad. The defendant contended that for a completion of communication, for a completion of communication of acceptance, it must be put in the course of transmission, it must be put in the course of transmission, since the words of acceptance, were put into the course of transmission, were put into the course of transmission, that is, the words were spoken. That is where the words were spoken into the telephone, at Khamgaon. At Khamgaon, the jurisdiction should be of the courts. The jurisdiction
should be at the courts, should be at the courts at खामगांव. तो ये डिफेंडेंट का कहना था कि हमने जो वर्ड्स ऑफ एक्सेप्टेंस है वो खामगांव में छोड़े. So that is the word which is put into the course of transaction at खामगांव. So खामगांव should be the place of jurisdiction. ठीक है. बट यहाँ कोर्ट का मानना ये था कि जो वर्ड्स आपने खामगांव में छोड़े वो सुने कहाँ गए, अहमदाबाद में. राइट. सो अहमदाबाद में वो कंक्लूड हुआ, खामगांव में कंक्लूड नहीं हुआ. वो कंक्लूड अहमदाबाद में हुआ. क्यों? क्योंकि अहमदाबाद में आपने सुना. सो जहां कंक्लूड हुआ वहां पे कॉन्ट्रैक्ट में. ओके. राइट. लिखो इसमें, इट वॉज हेल्ड दैट वेट गुलफिशा वेट. ओके. अभी जूम, चलो आप लिख लो, जूम इन कर लिया मैंने. आप इसका वो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो. राइट. डन. ग्रेट. इसमें आगे लिखो, इट वॉज हेल्ड दैट mere making a proposal, mere making a proposal does not form the part of the cause of action, does not form part of cause of action for damages in case of breach of contract. In case of breach of contract, however the cause of action is at the place where the contract is concluded, where the contract is concluded. The majority judgment applied the English law, the majority judges लिखो, judgment नहीं judges. Okay. इसको judges कर दो. The majority judges applied the English law in Entors Limited, versus Miles Far East Corporation, and concluded that the place of contract is where the acceptance is received by the proposer. Therefore, the place of contract was held. Therefore, the place of contract was held to be Ahmedabad. That is where acceptance was received. That is where the acceptance was received. Okay? Got it? Karthik, clear? Sharad, Spriya, Chirag, Gulfisha, Ishani, Pranjali, Sunita, Umaid, and everyone, online students. So this is what interpresentis. Interpresentis जहां पर आप आमने सामने हो, not only physically but virtually भी.
अगर आप इंटर प्रेजेंटिस हैं तो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वहां होगा जहां आपने एक्सेप्टेंस सुना है, राइट? ओके, बिकॉज दैट इज द प्लेस वेयर द कॉन्ट्रैक्ट गॉट कंक्लूड्स, कि वहां पे कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है। तो जहां सुना वहां पर प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग parties inter absentis, but not now. That is tomorrow, right? Not now. But now today, tell me, do you have any doubt in today's class, Chirag? देखो, सेक्शन 4 में हमने अभी क्या पढ़ा, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, ठीक है? शरद, बता दो पैरा 1 क्या कहता है सेक्शन 4 में। बंद कर दो, बंद कर दो, सब बंद कर दो, बता दो, बंद कर दो बेटा। अच्छा, 1 वाले में तो आप आए थे, लेट आए थे, ठीक। प्रिया, 1 में क्या कह रहा है? प्रपोजल कंप्लीट कब होगा? Who has made? मैंने प्रपोजल दिया तो मुझे तो नॉलेज है ही। कंफ्यूज हो गया ना बेटा? वेरी गुड, हो गया तो। दीपांशी, टू whom it is made, ठीक है? तो देखो, सेक्शन 4 में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, वो बात करता है कम्युनिकेशन की, ठीक है? अब कम्युनिकेशन 3 चीजों की होती है, एक एक्सेप्टेंस की, दूसरा प्रपोजल की, तीसरा रेवोकेशन। तो पैरा 1 बात करता है कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल व्हेन इट इज कंप्लीट, कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल तब कंप्लीट होगा जब सामने वाले को पता चल जाए, राइट? व्हेन इट इज रीच टू द पर्सन टू whom it is made, then the communication of proposal is complete. But when we talk about communication of acceptance, then there are 2 cases. Mr. Karthikeya will explain. So the first is when the communication is complete against the proposal. When it is put in the due course of transmission, it is complete as against the proposal. ठीक है, एक और पॉइंट भूल गए आप इसमें, when it is put in the course of transmission as it is out of his power, राइट? ये चीज आपको लिखना है, अभी इसको डिस्कस करेंगे आगे चल के कि आउट ऑफ हिज पावर क्या होता है। सो एज अगेंस्ट द प्रपोजर, द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट व्हेन इट इज पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन एज इट इज अगेंस्ट द आउट ऑफ हिज पावर, बियॉन्ड हिज पावर टू कंट्रोल, ठीक है? एंड द नेक्स्ट इज communication of acceptance as against the acceptor. तो when it is reached to the proposer, तब acceptor बाउंड हो जाएगा, ठीक है? राइट? अब इसी में ही 2 तरह की कम्युनिकेशन होती है, एक इंटर प्रेजेंटिस और एक इंटर एब्सेंटिस। इंटर प्रेजेंटिस मतलब इंस्टेंटेनियस रूल। यहां पर हमारा प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल बी दैट प्लेस वेयर द एक्सेप्टेंस इज हर्ड और रिसीव्ड, that will be the place of contract, okay, right? ठीक है? But in inter absentis, the place of contract is different. That is the postal rule. We will be discussing that tomorrow. ठीक है? Is it clear, everyone? Clear है? पीछे चिराग clear है? Good. Over here online, because I'm concluding it over here. ठीक है? So thank you everyone. God bless you. We shall meet tomorrow. Thank you.